Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is position and powers of the Prime Minister of United Kingdom. Position and powers of the Prime Minister of United Kingdom or British Prime Minister. ये हमारा आज का टॉपिक है and it is a part of the syllabus of political system third semester. पॉलिटिकल सिस्टम थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूनाइटेड किंगडम वहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज के क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हाउ द पोजीशन ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इवॉल्व्ड। So it evolved as a convention. The office of the British Prime Minister evolved as a convention. In 1721, there was a man called Robert Walpole who was appointed as the first Prime Minister of United Kingdom. Actually, उस दौर में प्राइवी काउंसिल हुआ करता था और उस प्राइवी काउंसिल में there was a small committee which later on became the cabinet, and one of the members of the cabinet was appointed as the prime minister to the king, and Robert Walpole was the first person who occupied this position. अच्छा, फिर रिफॉर्म्स एक्ट 1832 के मुताबिक रिफॉर्म्स एक्ट 1832 के मुताबिक it was declared that only a member of the House of Commons can become prime minister. इससे पहले लॉर्ड्स यानी members of the House of Lords, they could also appointed as prime minister. So in 1832 it was decided that only the members of House of Commons can become the prime minister. अच्छा, the term of the prime minister was fixed in 1878. As we said earlier, that the office and position has evolved as a convention. It has gone through an evolutionary process. तो आप देख सकते हैं कि 1721 में इस ऑफिस का आगाज़ हुआ था, फिर 1832 में it was decided that only the House of Common members would become the prime ministers. 1878 में इसके टेनेवर या टर्म के बारे में कहा गया और फिर ट्रीटी ऑफ बर्लिन हुआ था. लॉर्ड बेकन्सफील्ड, the Prime Minister of England, he was legally recognized as the Prime Minister. और फिर further position was cleared when the British Parliament passed Minister of Crown Act
of Crown Act 1937। जब ये एक्ट पास हुआ तो इससे फर्दर प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस की वजाहत हुई। अब हम थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि ब्रिटिश जो एग्जेक्टिव है, स्पेशली द पॉलिटिकल एग्जेक्टिव, और फिर पॉलिटिकल एग्जेक्टिव में स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द कैबिनेट, और फिर कैबिनेट में अबाउट द प्राइम मिनिस्टर। So we are discussing that what is the position of Prime Minister in the British cabinet. So the position of the Prime Minister and its importance can be analyzed from various sayings and statements or quotes about this position. I am quoting some of these here. Prime Minister is the pivot of the whole system of government. Lasky is a political thinker and political scientist, and he says that the position of Prime Minister is just like a pivot of the whole system of government in United Kingdom। मतलब ये कि इंतहाई पाइवोटल पोजीशन है। इसी तरह जॉन मोरले, ये एक दूसरा पॉलिटिकल थिंकर है, एंड ही सेज दैट प्राइम मिनिस्टर इज द कीस्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्क। जॉन मोरले सेज दैट प्राइम मिनिस्टर इज द कीस्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्क। मतलब अगर कैबिनेट एक इमारत है तो इसका बुनियादी स्टोन या हिस्सा वो प्राइम मिनिस्टर है। इसी तरह एक और पॉलिटिकल थिंकर है, ही सेज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इज अ मून among lesser stars, and prime minister is the captain of the ship of the state. It is said by Professor Monroe। अच्छा, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर किस तरह अपॉइंट होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर is appointed by the monarch। Monarch, whether it is the king or queen, he or she has to appoint the prime minister। और वो कौन से या किस शख्स को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा, क्वालिफिकेशन उसकी क्या होगी, मेंबर of the House of Commons which has majority support। हाउस ऑफ कॉमन्स में जिस शख्स को मेजॉरिटी सपोर्ट हासिल हो, द मोनार्क विल आस्क हिम टू टेक वोट एंड ही विल बी अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, अब हम आते हैं पावर्स एंड फंक्शंस। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के पावर्स और फंक्शंस क्या है। तो as we know that the in the United Kingdom there is parliamentary system, and almost all powers originate from the parliament, and prime minister is also a part of it। There is cabinet and there are political parties
Though there are limitations, yet the Prime Minister enjoys enormous kinds of powers. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर exercises most of the executive powers, and it is actually an executive position in a parliamentary system. Up there are various executive powers of the British Prime Minister. Firstly, formation of cabinet. कैबिनेट को तश्कील देना, कैबिनेट को बनाना, इट इज़ द प्रिविलेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और वो ये पार्टी रिकमेंडेशंस की बुनियाद पर करेगा। वो जब अपने साथ मिनिस्टर्स को डिफरेंट पोर्टफोलियो देते हैं तो पार्टी की रिकमेंडेशन को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। दूसरा जो पावर है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज एमंग द मिनिस्टर। एक तो कैबिनेट तश्कील देता है और फिर उन कैबिनेट मेंबर्स या मिनिस्टर्स में डिफरेंट पोर्टफोलियोज तकसीम करता है। तीसरा, टू शफल ministries. The Prime Minister not only has the power to appoint ministers, but he also has the power to shuffle and change their ministries. Fourthly, the Prime Minister is the chairman of the cabinet as well as of all the meetings of the cabinet. Chairman of cabinet and chair of meetings. Or lastly, he coordinates several ministries. So Prime Minister is the coordinator of several ministries, and he has to hold responsible all ministers to him. अच्छा, तो ये एग्जीक्यूटिव पावर्स थे ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। इनके अलावा एग्जीक्यूटिव पावर्स में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के फॉरेन रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी और war and peace लाइक सिचुएशन में उसका किरदार, ये भी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के एग्जीक्यूटिव पावर्स का हिस्सा है। अच्छा, तो ये हो गई एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द लेजिस्लेटिव पावर्स। Though the position of the Prime Minister is executive, yet he or she exercises enormous legislative powers because there is parliamentary system. Prime Minister and his cabinet are part of parliament, and there is coordination of powers. In a parliamentary system, there is always coordination of powers, and the legislature, especially the lower house, is always controlled by the executive, by the cabinet and the prime minister. तो legislative powers में
सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स का लीडर होता है वो। ही हैज द पावर टू डिसॉल्व द हाउस ऑफ कॉमन्स। डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स का इख्तियार ये भी प्राइम मिनिस्टर के पास है। जब वो एडवाइस करे मोनार्क को, तो द मोनार्क हैज़ टू डिसॉल्व द हाउस ऑफ कॉमन्स। Our there is collective responsibility, मतलब प्राइम मिनिस्टर and his cabinet are responsible to the parliament, but on the other hand they command support in the House of Commons, which give them enormous influence. इसके अलावा एड्रेस a policy to the House. Prime Minister can address and message the House about his or her policies. So these are the legislative powers of the British Prime Minister. Beside these, the British Prime Minister is a chief advisor to the king or queen. And prime minister is representative of the nation, and this very thing give him or her enormous influence in the policy making and directing of his state. So this was the position and powers of the British Prime Minister that we discussed.